So let's move to the next concept, students. The next concept that we're discussing is how do we determine, you know, the rate law expression. And once we understand like how do we determine the rate law expression, फिर हमको ये भी समझ में आ जाएगा students कि how do we actually determine the order of a certain reaction. The first method that we are discussing, students, is known as isolation method. अभी isolation method है क्या? The logic is very similar to pseudo first order reactions और इसका basic जो है वो मैंने already तुमको बताया है students. Say for example, students, if I consider a reaction and the reaction is small a moles of A, and say if it is reacting with small b moles of B, and if it is producing small c moles of C plus small d moles of D, then according to rate law expression, students, can I say rate of reaction is directly proportional to molar concentration of A into molar concentration of B raised to some power. We don't know the power, right, as of now. मैं बोलता हूँ let us say the power is x here and the power is y. Now if I want to remove the proportionality sign, students, what we'll have to do is we'll have to introduce a constant. तो constant introduce कर दिया students, so expression हो जाएगा r equals to k into molar concentration of A raised to x into molar concentration of B raised to y. Now in this case what we do is we determine the orders with respect to A individually and B individually. So हम लोग क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज यूज्ड इन लार्ज एक्सेस. तो समझो मैंने ए है ना, ए का कॉन्सेंट्रेशन को एकदम लार्ज एक्सेस में यूज कर दिया. हमने सूडो ऑर्डर रिएक्शन के केस में डिस्कस किया था दैट इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज यूज्ड इन लार्ज एक्सेस देन इसका कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम कांस्टेंट एंड लेट मी से दैट कांस्टेंट इज के डैश. सो इफ आई जस्ट सब्स्टिट्यूट दैट हियर व्हाट विल आई गेट? सर हमको मिलेगा आर इक्वल्स टू के इनटू, I'm so sorry, this is k dash लिख देता हूँ, इधर k लिख देता हूँ, and this will be into concentration of B raised to I. मतलब in this case students, the rate of the reaction will change only when the concentration of B will change. अगर B का concentration change होगा ना students, तो ये rate of reaction change होगा. Now suppose in, अगर मैंने B का concentration है ना students, say I'll just write it here. Suppose in if I, this is B raised to Y, right? अगर मैंने B का कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज किया और डबल कर दिया एंड से द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, सो कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? सर ये स्क्वायर रहेगा ना. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. अगर मैंने B का कॉन्सेंट्रेशन समझो डबल किया एंड द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज देयर इट से इंक्रीजेस बाय ओनली 2 टाइम्स, मतलब व्हाट इज द पावर ऑफ B, या 2 का पावर क्या होना चाहिए? 1. I hope you are understanding, students. So what we do is we change the concentration of B and find out the change in the rate of reaction, and accordingly we get the value for Y. I hope you get this one. अभी मुझे Y मिल गया students, so we got the order with respect to B, right? So I'll just write here. समझो B का concentration मैंने डबल कर दिया, so ये तो दोनों constants ही है students, and say the rate of reaction if it is increasing by 4 times, then this power will be 2. So y का वैल्यू क्या आ जाएगा students? 2 आ जाएगा, like that. तो can I say similarly x can be calculated? हाँ सर, x भी निकाल सकते हैं ना students. In this case by taking B in large excess. तो B है ना, B को हमने लार्ज एक्सेस में यूज किया स्टूडेंट्स और ये कैलकुलेट कर दिया एंड विल गेट द वैल्यू फॉर x एज वेल. एंड व्हेन यू ऐड x प्लस y, अगर मैंने x और y को ऐड किया तो व्हाट विल आई गेट स्टूडेंट्स? विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. आई होप यू गाइस वेरी क्लियर विथ द लॉजिक ऑफ आइसोलेशन मेथड. सो मेथड नंबर 1 स्टूडेंट्स, वी कॉल इट एज द आइसोलेशन मेथड. व्हेन आई टॉक अबाउट मेथड नंबर 2, अगर मैं सेकेंड मेथड की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकेंड मेथड? सेकेंड मेथड का नाम है स्टूडेंट्स, इट इज द मेथड ऑफ इनिशियल रेट्स. Now when I talk about method of initial rates, मेथड ऑफ इनिशियल रेट्स में ना स्टूडेंट्स देयर इज अ कॉम्बिनेशन, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है. आइसोलेशन मेथड भी यूज करते हैं एंड वी मेक यूज ऑफ अ ग्राफ ऑल्सो फॉर फाइंडिंग आउट द आंसर. कैसे करते हैं समझो. मैंने रिएक्शन लिखा है स्टूडेंट्स एंड से द रिएक्शन इज स्मॉल ए मोल्स ऑफ ए प्लस स्मॉल बी मोल्स ऑफ बी एंड से इफ इट इज गिविंग यू स्मॉल सी मोल्स ऑफ सी
plus small d moles of d. So can I say the rate law expression will be, abhi directly if I students, R equals to K into molar concentration of A raised to X into molar concentration of B raised to Y. Let me say हम लोग ने B है ना, B को large axis में यूज किया स्टूडेंट्स. So if B is used in large axis, so can I say its concentration will become constant, and let us say that the constant is K dash. So इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या मिलेगा सर, R इक्वल्स टू K इंटू K डैश इंटू दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी A रेज टू X. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स. हाँ सर, A रेज टू X मिलेगा ना. A रेज टू X मिला. लेट मी से कि ये जो कांस्टेंट है ना स्टूडेंट्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय न्यू कांस्टेंट, एंड द न्यू कांस्टेंट इज R इक्वल्स टू K double dash into molar concentration of A raised to X. Okay, let me say this equation 1, and if I take log, taking log on both sides. So students, if I take log on both sides, अगर मैंने दोनों तरफ log ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा. देखो सर, अगर हम लोग ने log ले लिया दोनों तरफ, so अपना एक्सप्रेशन क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पर the expression that we had was R equals to K double dash into A raised to X. So this will become log R is equal to log K double dash plus log molar concentration of A raised to X. अगर मैंने इसको rearrange करके लिखा स्टूडेंट्स, तो can I write this expression as, the expression can be written as log R is equal to, here the term is log A raised to X. Students, अगर तुमने ध्यान से देखा है तो it is log A raised to X. So can I write it as X log A? So sir, इसको ऐसे लिख सकते हैं, this will become X into log A plus this will become log K double dash. अभी इसमें जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो ग्राफ दैट वी प्लॉट इज अ ग्राफ ऑफ log R versus log A. So where have we plotted this? सर हमने इसको प्लॉट किया है y एक्सिस में, इसको किधर प्लॉट किया सर, इसको हमने प्लॉट किया x एक्सिस में, बराबर है. कैन आई से स्टूडेंट्स दिस इज योर कांस्टेंट प्लस, सो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अपना स्लोप. मतलब ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन सर, दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c. इक्वेशन का फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स सर, इक्वेशन का फॉर्म है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. इफ दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म स्टूडेंट्स y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, बराबर है. तो ग्राफ कैसा आएगा सर, द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. विल इट पास थ्रू द ओरिजिन, द आंसर इज नो सर, इट हैज़ अ y इंटरसेप्ट. तो यहाँ पे हमको जो ग्राफ मिलेगा स्टूडेंट्स, वो कैसा ग्राफ रहेगा सर, द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. इट वोंट पास थ्रू द ओरिजिन, इट हैज़ अ y इंटरसेप्ट. तो इसका ये ग्राफ ऐसा कुछ तो भी आएगा स्टूडेंट्स. हाँ सर, द ग्राफ विल बी लाइक दिस. अगर मैंने ये ग्राफ का स्टूडेंट स्लोप कैलकुलेट किया, सो इफ आई जस्ट गो ऑन टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, तो इसका स्लोप कितना आएगा सर, स्लोप आएगा x. एंड व्हाट इज दैट x सर, दैट इज नथिंग बट इट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. दिस मेथड इज नोन एज द मेथड ऑफ इनिशियल रेट. सो दिस इज मेथड नंबर 2 स्टूडेंट्स. ये मेथड यूज़ करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं सर, वी कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो जैसा मैंने यहाँ पर ए का ऑर्डर डिटरमाइन किया स्टूडेंट्स, तुम लोग क्या कर सकते हैं सर, सेम मेथड यूज़ करके वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी, and x plus y will give you the order. I hope you guys are very clear with this. And method number C students is by making use of integrated rate expression. सर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन यूज करके कैसे आंसर कर सकते हैं स्टूडेंट्स. अभी हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया इसके ऊपर से. कैसा, अगर पूछा है कि शो दैट द रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सो व्हाट इज ए एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का रिएक्शन सर, इट इज 2.303 by t log C0 by Ct टू द बेस 10. तो k वैल्यू अगर अलग अलग टाइम इंटरवल पे कैलकुलेट किया एंड k इज कांस्टेंट, so k is constant at different